Hello guys, in this video we are going to discuss joint military exercises of Indian Army which are very important from CDS point of view. The first exercise that we are going to discuss is exercise Sampriti. ये जो exercise है ये exercise है between India and Bangladesh and Sampriti 9 which held recently. It occurred from 3 to 16th February 2020 at Umroi, Meghalaya. तो Sampriti का जो latest edition हुआ है वो हुआ है Sampriti 9 जो कि अभी February 2020 में मेघालय में हुआ है और इसका जो लास्ट एडिशन था 8th एडिशन इट वाज कंडक्टेड इन तंगैल बांग्लादेश. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज हैंड इन हैंड. ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द 8th इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019 with the theme of counter terrorism was conducted at Umroi, Meghalaya from 7 to 28 December 2019. तो इस एक्सरसाइज का जो 8th एडिशन था वो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी काउंटर टेररिज्म और ये भी रिसेंटली हुआ था 7 to 28 December 2019 में मेघालय में. इस एक्सरसाइज का जो एम था टू प्रैक्टिस जॉइंट प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन सेमी अर्बन टेरेन. एंड इस एक्सरसाइज का जो 2018 वाला एडिशन था वो हुआ था शेंगडू चाइना में. एंड दिस एक्सरसाइज डिडंट टेक प्लेस इन 2017 ड्यू टू द 72 days लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स इन डोकलाम. तो जो डोकलाम वाला इशू था उसकी वजह से 2017 में इस एक्सरसाइज का जो एडिशन था वो नहीं हुआ था और जो रिसेंट इसका एडिशन है वो है 2019 वाला जो कि मेघालय में हुआ था. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज शक्ति. ये जो एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. Exercise Shakti is a biennial exercise which is conducted alternatively in India and France. The 2019 edition will be conducted from 31st October 2019 to 13th November 2019 in Rajasthan, India. तो इन इंडिया और फ्रांस के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है शक्ति और इसका जो 2019 वाला एडिशन था वो हुआ था राजस्थान में बिटवीन 31st October to 13th November. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति. ये जो एक्सरसाइज है ये बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया है. इसका जो 6th एडिशन है द 6th एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति 2018 टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्मी इन बंदुंग इंडोनेशिया ऑन February 19, 2018. तो गरुड़ शक्ति का जो लास्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है 2018 में और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में. नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रबल दोस्तिक. ये जो एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक 2017 बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान बिगैन एट बाकलो, हिमाचल प्रदेश. प्रबल दोस्तिक एक्चुअली मीन्स रोबस्ट फ्रेंडशिप. तो ये जो एक्सरसाइज है बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक इसका जो एडिशन है 2017 वाला वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में. एंड प्रबल दोस्तिक का एक्चुअल मीनिंग होता है रोबस्ट फ्रेंडशिप. एंड इसका जो सेकंड एडिशन है ये जो 2017 वाला जो एडिशन था ये इसका सेकंड एडिशन है. इट इज़ द सेकंड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज. एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन था दैट हेल्ड इन 2016 इन कारागंदा रीजन ऑफ कजाकिस्तान. तो जो इसका पहला एडिशन था वो हुआ था 2016 में कजाकिस्तान में और इसका जो सेकंड एडिशन है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में 2017 में. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज खंजर. ये जो एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान. On 29th March 2018, the 5th Indo-Kyrgyzstan Joint Training Exercise Khanjar 5th culminated after a joint tactical validation exercise and a closing ceremony held at Counter-Insurgency Jungle Warfare School, Verengte. तो जो इंडो किर्गिस्तान का जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है दोनों का जॉइंट वो है खंजर. इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था खंजर 5th जो कि हुआ था 2018 में. सो इट इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान. Another important exercise is exercise nomadic elephant. ये जो exercise है ये है between India and Mongolia and इसका जो 14th edition था the 14th edition of this military exercise held from 5th to 8 October 2019 at Baklo, हिमाचल प्रदेश. तो nomadic elephant का जो recent edition हुआ था वो हुआ था 14th edition जो कि 2019 में हुआ था और ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में. And it is an exercise between India and Mongolia.
Another important exercise is Exercise Indra. It is an exercise between India and Russia. And Exercise Indra 2019, a joint tri-services exercise, which is very important, tri-services. Tri-services exercise between India and Russia was conducted in India from 10 to 19th December 2019 simultaneously at Babina near Jhansi, Pune and Goa. तो जो इंदिरा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया और ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सर्विसेज इंक्लूडेड हैं. इसका जो रीसेंट सेशन था, एडिशन था, वो हुआ था 2019 में. ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बबीना झांसी के पास, पूना and Goa, and it occurred between 10 to 19 December 2019. Next exercise is Exercise Mitra Shakti. It is an exercise between India and Sri Lanka, and the 7th edition of India-Sri Lanka Joint Military Training Exercise Mitra Shakti 2019 was scheduled to be conducted in Pune from 1st to 14 December 2019. तो मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और इसका जो 7th एडिशन था वो हुआ था अभी रिसेंटली 2019 के दिसंबर में, 1st to 14 December, and it was conducted in Pune. Exercise Maitri. It is an exercise between India and Thailand. An Indian Army and Royal Thailand Army conducted their joint military exercise Maitri 2019 at Meghalaya from September 16th to 29th September 2019. तो मैत्री जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, और ये भी लास्ट ईयर ही हुई थी. कहाँ पे? मेघालय में. एक्सरसाइज अजया वॉरियर. ये जो एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड यूके, and the 5th edition of India-UK Joint Military Exercise Ajaya Warrior was conducted at Salisbury Plains, UK from 13th to 26th February 2020. So ये बहुत ही recent exercise है अजया वॉरियर. ये है between India and UK, और इसका जो latest edition हुआ है वो हुआ है 13th to 26th February 2020, and it occurred in UK. Another important exercise is Exercise Yudh Abhyas. ये जो exercise है ये है between India and USA, and the joint military exercise Yudh Abhyas 2019 began on September 5th, 2019 at the Joint Base Lewis McChord near Washington between India and USA, and this exercise lasted till 18th September. तो ये जो युद्ध अभ्यास exercise है ये 5th September 2019 में शुरू हुई थी, and it ended at 18th September 2019. और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी यूएसए में, वॉशिंगटन. It is one of the biggest joint military exercise and defense cooperation endeavors between India and USA. Yudh Abhyas 2019 is the 15th edition of the joint military exercise hosted alternatively between the two countries. तो अभी जो recently युद्ध अभ्यास का जो edition हुआ था 2019 का, वो इसका 15th edition था. वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. इसका जो रिसेंट सेशन हुआ था वो हुआ था 2019 सितंबर में वॉशिंगटन में. अनदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज वज्र प्रहार. ये जो एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एंड द 10th edition of the joint military exercise Vajra Prahar between India and the US will be held at Joint Base Lewis McChord JBLM in Seattle from October 13th to 28th 2019. तो ये जो इसका recent edition है वज्र प्रहार का, वो हुआ था अभी अक्टूबर में 2019 में, and it was the 10th edition of this exercise between India and US. Another important exercise is exercise Winbacks. It is an exercise between India and Vietnam, and the India-Vietnam bilateral army exercise Winbacks 2018 was conducted at Jabalpur in Madhya Pradesh. तो इसका जो recent edition था वो हुआ था 2018 में जबलपुर MP में, and it is the first military exercise between the two countries, so it becomes all more important. So Winbacks is an exercise between India and Vietnam. Exercise Al-Naga. ये जो exercise है ये between India and Oman, and the 3rd edition of bilateral military exercise between India and Oman, exercise Al-Naga 3, held at Jebel Al-Aqdar Mountains in Oman from 12th to 25th March 2019. तो Al-Naga का जो 3rd edition था वो भी recently 2019 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ओमान में. It follows first two joint exercises that were held in Oman in January 2015 and India in March 2017 respectively. तो इसका जो first edition हुआ था वो हुआ था 2015 में, जो कि ओमान में हुआ था. सेकेंड एडिशन इसका हुआ 2017
में इंडिया में, और इसका जो 2019 वाला एडिशन था वो दोबारा से हुआ ओमान में। The last exercise that we'll do here is exercise IMBEX. ये जो exercise है ये है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, and the second edition of India Myanmar bilateral army exercise IMBEX 2018 to 19 commenced at चंडी मंदिर military station near चंडीगढ़। तो इसका जो second edition था IMBEX exercise का, ये हुआ था 2018 to 2019 के बीच में, and वो कहाँ पे हुआ था? चंडी मंदिर military station that is there in चंडीगढ़। Now we'll see the important naval exercises. The first exercise is exercise SLINEX. SLINEX is an exercise between India and Sri Lanka. SLINEX 2019, the bilateral maritime exercise between India and Sri Lanka, commenced on 7 September 2019 at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. तो रिसेंटली जो स्लीनेक्स का एडिशन हुआ है वो हुआ था 2019 में विशाखापट्टनम में। श्रीलंकन नेवी हैज सेंट 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स SLNS Sindhurala and SLNS Suranimala to India to participate in 7th annual joint Indo-Lanka Maritime Fleet exercise SLINEX 2019. Another exercise is exercise SIMBEX. SIMBEX is an exercise between India and Singapore. इसका जो 26th edition है, the 26th edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX 19 held in the South China Sea in May 2019. तो ये जिसका लास्ट एडिशन हुआ था ये हुआ था मई में 2019 in South China Sea. In addition to it, IN ships Kolkata and Shakti long-range maritime patrol aircraft P-88I will also participate in the exercise. तो इसमें जो participate किया था वो किसने किया था? INS कोलकाता, शक्ति and aircraft P-8I. Another exercise is IMCOR. IMCOR is an exercise between India and Myanmar, and 2019 Indo-Myanmar Coordinated Patrol IMCOR took place from 20th May to 28th May in 2019 at Andaman and Nicobar Command. तो IMCOR का जो एडिशन हुआ था वो 2019 मई में हुआ था अंडमान एंड निकोबार में। Another important exercise is Malabar. It is an annual exercise between the navies of India, Japan and US held alternately in the Indian and Pacific Oceans. It began in 1992 as a bilateral exercise between India and US. तो 1992 में मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी एंड इनिशियली ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में थी, US एंड इंडिया, बट then it got permanently expanded into a trilateral format with the inclusion of Japan in 2015. तो 1992 में जब ये इनिशियल फेज में शुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ इंडिया एंड यूएस इसके पार्ट थे, बट 2015 में इसमें जापान भी ऐड हो गया था। एंड द 23rd एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार was scheduled between the navies of India, Japan and US from 26 September to 4th October 2019 off the coast of Japan. INBN Corpat. It is an exercise between India and Bangladesh, and the second edition of Indian Navy and Bangladesh Navy Coordinated Patrol Corpat held in Northern Bay of Bengal on 10th to 11th October 2019. तो ये जो एक्सरसाइज है इसका एडिशन अक्टूबर 2019 में हुआ था बे ऑफ बंगाल में। Next one is Konkan exercise. It is an exercise between India and UK, and this is a naval exercise. Konkan 18 between India and UK was conducted from November 28 to December 6, 2018 of Goa. तो ये 2018 में इसका लास्ट एडिशन हुआ था दिसंबर में और ये कहाँ हुआ था? गोवा में। Now Varun exercise. Varun exercise is an exercise between India and France, very important, and the first part of the Indo-French joint naval exercise Varuna 19.1 was conducted off Goa coast from 1st to 10th May 2019. तो इसके जो 2 पार्ट रहे हैं 19.1 और 19.2, ये 2 फेजेस में ये हुई थी एक्सरसाइज। तो इसका जो 19.1 जो इसका फर्स्ट फेज था वो हुआ था गोवा के कोस्ट पे, ठीक है, 1 to 10th May 2019, and it was 17th edition of this bilateral naval exercise held between both the countries. And इसका जो second part था Varuna 19.2, it held in Djibouti at the end of May 2019. Indian Navy will be represented by aircraft carrier INS Vikramaditya, destroyer INS Mumbai, Tech class frigate INS Tarkash, Shishumar
class submarine INS Shankul and INS Deepak. Next important exercise is Nasim al-Bahar. This exercise occurs between India and Oman and the 12th edition of bilateral maritime exercise Nasim al-Bahar held in Mormugao Port, Goa. तो इसका जो 12th edition हुआ था वो हुआ था गोवा में. Nasim al-Bahar is a naval exercise between the Indian Navy and the RNO being conducted since 1993. And Indian Navy ships Bias and Subhadra and Oman Navy ships RNOV Al Rasit and RNOV Kasab participated in this exercise. Now we'll see important Air Force exercises. Exercise Indradhanush. It is an exercise between India and UK, and the 5th edition of India-UK Joint Air Force Exercise Indradhanush began at Air Force Station Hindon, Ghaziabad, Uttar Pradesh on 24th February 2020. तो इंद्रधनुष का जो recent edition हुआ है वो हुआ है 24th February 2020 में उत्तर प्रदेश में. And this was the 5th edition of the India-UK Joint Air Force Exercise. Another important exercise is Exercise Garuda. It is an exercise between India and France. The Indian Air Force participated in a bilateral exercise between Indian and French Air Force named Exercise Garuda 6, France, from 1st to 12th July 2019. This is the 6th edition of Exercise Garuda held at French Air Force Base Mont de Marsan. तो ये जो गरुड़ा था इसका लास्ट जो एडिशन हुआ है वो हुआ था 2019 में और ये कहाँ हुआ था ये हुआ था French Air Force Base पे. And this was the 6th edition of this exercise. The Indian Air Force contingent comprising of 120 air warriors and 4 Su-30 MKI along with an IL-78 flight refueling aircraft departed for the participating in exercise Garuda 6. And the last exercise Garuda 5th, जो इसकी last edition था Garuda 5th, it held at Air Force Station Jodhpur in June 2014. Next important exercise is exercise Red Flag. ये जो एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. इट इज़ अ पैसिफिक एयर फोर्सेस स्पॉन्सर्ड एक्सरसाइज मेंट टू प्रोवाइड रियलिस्टिक ट्रेनिंग इन अ सिमुलेटेड कॉम्बैट एनवायरनमेंट ओवर द जॉइंट पैसिफिक अलास्का रेंज कॉम्प्लेक्स. Recently, the US Air Force has cancelled the Phase 1 of Red Flag due to the COVID-19 outbreak. The Red Flag Alaska 21 was scheduled to be held in Alaska from 30th April to 15th May 2020. Next exercise is Exercise Desert Eagle. This exercise is an exercise between India and UAE. Bilateral air combat exercise Desert Eagle 2 has started between Indian Air Force and United Arab Emirates Air Force at Al Dhafra Air Base, UAE from May 24, 2016 that will be continued till June 3, 2016. तो ये जो डेजर्ट ईगल है ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई और इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था 2016 में यूएई में. Another important exercise is exercise Eastern Bridge. This is an exercise between India and Oman. An Indian Air Force participated in a joint bilateral exercise Eastern Bridge 5th with Royal Air Force Oman in 2019. तो इसका जो 5th edition हुआ था अभी recently वो हुआ था 2019 में. This exercise is being held at the Air Force Base Masira, Oman. ये जो exercise हुई थी ये ओमान में हुई थी. An Indian Air Force contingent comprises of MiG-29 and C-17 aircraft, and it would be the first time that MiG-29 fighter aircraft will be participating in an international exercise outside India. तो ये जो exercise हुई थी 2019 में ये पहली ऐसी exercise हुई थी जहाँ पे MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में आउटसाइड इंडिया. एंड द लास्ट exercise Eastern Bridge 4th exercise was conducted in 2017 at Jamnagar, India. The last important exercise that we have to see is Siam Bharat. It is an exercise between India and Thailand. And India and Thailand concluded their second bilateral humanitarian assistance and disaster relief HADR exercise 2017. And the exercise is named as Indo-Thailand Siam Bharat 17 HADR.